The Monday morning show. So today I am going to talk about the state of mind, how to understand it. And anyone would like to give any opinion about the topic? How do we understand the state of mind? What is it? Yes, anyone would like to say something about it? अभी सुबह I think नहीं हो रहा कुछ भी. So I'll continue with my presentation. Just let me start it off. It is what I'm talking about today is actually a quote. I'll be explaining that. So is my screen visible? Yes, ma'am, it is visible. Okay. So this is the actual quote. Everything is a state of mind. And when we understand this, we need to understand this to enrich yourself. सब कुछ mind से ही start होता है. So everything is a state of mind. And how can we understand this to enrich ourselves? I'll be presenting today. So what I want to give the background of the quote first. So this is Guru Padma Sambhav hai. He's also known as Guru Rinpoche. ये उनकी quote hai, his statement it is. And Guru Padma Sambhav was here in the 8th century. This is his picture, his image. And he was like he was born as an 8-year-old. He was found in the center of a lotus as an 8-year-old. And in fact, his coming was forecast by Gautam Buddha. Sakya Muni jo the, unhone forecast kiya tha कि like an enlightened Buddha will come to, you could say, bring more enlightenment to the world. So as in this place of Udiana, that is now in Pakistan, he was once found by the king of that area. And he didn't have any child, so he adopted this boy. And he is supposed to have been born as fully enlightened. Like Buddha had to, jo Gautam Buddha the, he had to work to get enlightenment. Meditation karni padi unko, he sought for it and then he obtained. But Padma Sambhav was born as a completely enlightened Buddha. And it was like he was here on earth for almost 200 years, and then he just went into the universe. He did not leave his body because he was born as an 8-year-old, so he did not leave his body also. He just went up there. So he was most of in the northern part of India. In fact, ये जो image है ये Revalsar की है. This is in Himachal Pradesh. And he was in that area. So the princess of that area, kingdom of Zahor hota tha us time wahan pe, jo unki princess thi, Mandarva, he was teaching her the tantric techniques. It is regarded as a tantric also. So her father disapproved of it, and to punish them both, he created a pyre, wood pyre, और उनमें दोनों को बिठा दिया, Padma Sambhav and Mandarva, and lit the pyre. But what happened was, it was amazing that the pyre turned into a lake. So there's a lake in Revalsar which has this legend attached to it. And both of them, Padma Sambhav and the princess, they were seen floating on the surface of the lake on a lotus, sitting on a lotus. So that was the amazing kind of guru he was. So then, of course, the king had to, he was really shocked with what had happened. So he allowed the princess to take initiation from the guru. And तो उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पे साइड में बुद्धिस्ट, नेपाल साइड में, तिब्बत में, भूटान में, all these areas have a lot of reverence for Guru Padma Sambhav. So I'll be talking of this now. Everything is a state of mind. Understand this to enrich yourself. To comprehend this thought, we first have to understand what is the mind.
what creates the mind? है क्या? Mind है क्या? For if the mind is not there, अगर mind है ही नहीं हमारे पास, तो we cannot experience life. कुछ हम life को समझ ही नहीं सकते. We cannot experience any kinds of ups and downs. कुछ भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव्स कुछ लाइफ में समझ नहीं आएगा कि माइंड ही नहीं है तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से करें. We won't feel any sorrows or ecstasies also. So if there is no mind, none of this is going to be there in our mind life. So even memories जो है वो भी नहीं हो पाएंगी, कुछ भी नहीं होएगा. So it is only the mind that makes you feel. Mind is feeling all the feelings. Mind है तो सारी experiences है. Now to understand what is the mind, mind भी क्या है, उसका the existence of mind, उसको ही समझने के लिए we first have to know what is consciousness. Mind को भी समझ, mind बात में, पहले हमें समझना है what is consciousness, क्योंकि that is what determines the existence of the mind. Consciousness ही नहीं है तो mind का कोई मायने ही नहीं रहता. So what is consciousness? Consciousness is the evidence that we are alive. हम हैं, हमारा वजूद है, हम जिंदा हैं, तो उसका एविडेंस क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस है. नेम इज नॉट रेलेवेंट कि आपका नाम क्या है, आप मैन हो, वुमन हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, none of that matters. It is just your awareness that you are alive. So, when we become conscious about ourselves, life in the present birth, कि हम कब शुरू होती है हमारी life, that starts from there when you become conscious of yourself. Like कोई अपने आप को, they will recall themselves as a 2-year-old. और कोई किसी को कोई मेमोरी नहीं होती तो उनको लगता है 5 साल से मेरी लाइफ शुरू हुई, उससे पहले क्या हुआ उनको नहीं मालूम. So when they become aware of themselves, they become like consciousness comes in, because consciousness is awareness. You become aware that you're a person, you're a living being. But again, consciousness के भी 2 parts होते हैं. Like it is not to be confused with the you who is present in the world. You are just the medium through which consciousness gains awareness. आपका कुछ वो नहीं है, आप सिर्फ एक चैनल हो. So you have to think of it in this way, that there are 2 yous. You are a combination of 2 aspects. The first aspect is the real you, which has been in existence from like since immemorial time, for a long time. कुछ हमें मालूम ही नहीं कब से हम existence में हैं. And the second one is the one present here in this birth. So these are the 2 yous. One is that immortal one, जो कि जिसकी journey continue होती रहती है, and one is the जो figure आपको, जो आपको body इस lifetime में मिली हुई, the physical aspect. Now the task is that the consciousness part जो है, जो consciousness जो immortal part है, it has to observe the physical part. Just observe it, just watch it. उसका सिर्फ ये task है, जो हमारा soul part जो है उसका ये काम है. अब physical part का क्या है? Physical part की एक identity है. It has a name and an identity. तो ये मीनू का वजूद है, ये नुपुर जी का है, ये अलीशा का है, ये सब हमारे आइडेंटिटीज बन गए हैं. So consciousness does not have this name because it has existed from times immemorial. बहुत टाइम से वो है, उसका कोई नाम नहीं है. It keeps resurfacing in every lifetime with different bodies, different names, and it comes to experience the world. And when it surfaces, when it comes into this world, जब आता है, तो it gets exposed to the activities of the world. फिर जब वो expose हो जाता है तो फिर उसको लगता है कि हाँ मुझे भी participate करना है. And then due to past conditioning, karma or other influences,
और इवन ड्यू टू व्हाट सोसाइटी सेज, वो उसी में ही फंसा हुआ होता है, वर्ल्ड में अपनी सारी जो वर्ल्डली सब चीजें उसमें ही वो एक तरह से धंसा हुआ होता है. सो कॉन्शियसनेस जो है इट लूजेस इटसेल्फ टू द आइडेंटिटी. कॉन्शियसनेस का वजूद खत्म हो जाता है, आइडेंटिटी प्रोमिनेंट हो जाती है. टू द नेम only, he becomes a name. So he's only responded as Abhishek or Raju or whatever the name is, he's just responding to that. उसका और कुछ वो नहीं, वो जो सोल वाला पार्ट है इट हैज गॉट दब गया है थोड़ा सा, उसकी इतनी प्रोमिनेंस नहीं रह जाती उसमें. अब द स्टेट ऑफ माइंड कम्स इन. जब आपका वजूद सेट हो गया है, कॉन्शियसनेस आ गई है, तो फिर द स्टेट ऑफ माइंड कम्स इन. बिकॉज व्हेन यू गेट इन्वॉल्व्ड इन लाइफ, इसमें रहने लग जाते, तो यू आर गोइंग टू फील ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. यू विल हैव एंगर, यू विल हैव जेलसी, रिग्रेट, हर टाइप के इमोशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगे. एंड इट इज द माइंड विच इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज इमोशंस. कॉन्शियसनेस आई तो उससे फिर माइंड आ गया, और माइंड में ये सारे इमोशंस आ गए. सो ऑल आर एक्सपीरियंसेस, all our memories, all our expectations, they are all states of mind. माइंड के जो उसमें जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही है, वो सब बिकॉज दे आर ऑल रिगार्डेड एज स्टेट्स ऑफ माइंड. सो योर एंटायर लाइफ, जो हमारी पूरी, जो भी हमारी जिंदगी चल रही है, एवरी मोमेंट दैट इज अनफोल्डिंग, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय योर स्टेट ऑफ माइंड. हर चीज के ऊपर यही हमारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, एक्सपेक्टेशंस हावी हो जाते हैं. इनकी वजह से हम सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. एंड देन वी आर, वॉट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग, ऑल दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू आवर लाइफ. कहाँ जाएगा? तो जो भी आप सोच रहे हो सब कुछ वापस आपके सामने ही आ रहा है. सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ इमोशंस जो है, और दीज काइंड ऑफ थॉट्स जो है, दे गिव एन आइडेंटिटी टू द माइंड. इनकी वजह से माइंड है, बिकॉज वी कैन ओनली फील द माइंड व्हेन देयर इज अ थॉट इन इट. अगर उसमें कोई थॉट ही नहीं है, माइंड में कोई थॉट ही नहीं है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ नो माइंड. और उसमें क्या होता है, वी आर मेयरली ऑब्जर्विंग, वॉचिंग. कुछ थॉट नहीं चल रहा हमारे दिमाग में कि हमने क्या सोचना है, क्या करना है. But the moment, so only a thought gives identity to the mind. बिना थॉट के माइंड की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता. But the moment हम थॉट लाते हैं, माइंड में थॉट आता है, क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट हैपेंस. हम उस थॉट में फंसने लग जाते हैं, उस थॉट के आसपास और थॉट्स आने लग जाते हैं. और फिर जब वो थॉट्स आते हैं तो साथ में जजमेंट भी आ जाती है. फिर हम सोचने लगते हैं अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, सारी जजमेंट वाली थॉट्स आ जाती हैं. तो उससे और हम थॉट्स में इन्वॉल्व होते रहते हैं, और थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं. एंड द कॉन्शियसनेस नाउ गेट्स टोटली आइडेंटिफाइड विद द माइंड. सो थॉट की वजह से हमारी जो भी हम थॉट रहे हैं, उससे माइंड को और स्ट्रेंथ मिलती है. और जो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी थी, सोल वाली, वो तो कहीं गुम ही हो गए थे, हो गई है, वो तो कहीं रह ही नहीं जाती. सो व्हेन द माइंड बिकम्स डोमिनेंट, जब उसमें ही ये सब कुछ आ जाता है, तो इट क्रिएट्स जजमेंट्स, इट क्रिएट्स चॉइसेस, एंड देन वी सी थिंग्स एंड वी क्लासिफाई देम एज गुड और बैड, ब्यूटीफुल और अगली, सब सारे थॉट्स वो आ जाते हैं. एंड फिर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उससे फिर एंगर आ जाता है, डिस्गस्ट आ जाता है, जो भी होता है सारे नेगेटिव वाली फीलिंग्स आ जाते हैं. और जो पॉजिटिव चॉइसेस हम करके सोचते हैं, तो उससे हमें एप्रिसिएशन मिलती है, जॉय मिलती है, खुशी मिलती है. तो जो हमारा थॉट प्रोसेस होएगा, उसी की तरह से हमारे माइंड में थॉट्स कंटिन्यू रहेंगे, उसी की टाइप से हम फीलिंग्स आती रहेंगी. सो ऑल द स्टेट्स ऑफ माइंड जो है, ऑल ऑफ सॉरो, हैप्पीनेस, दे स्टार्ट डेवलपिंग. तो ये सारा वो था कि माइंड है क्या, एंड हाउ डू दे गिव राइज टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड. सो कॉन्शियसनेस से अवेयरनेस आती है,
अवेयरनेस से फिर हम थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर माइंड का वजूद हो जाता है. सो एंड देन वी आर टोटली इमर्स्ड इन दिस माइंड, उसी में ही फंस जाते हैं. बट ये जो सारी चीजें होती है ना, सारे थॉट्स होते हैं, वो सब ऑल आर सब्जेक्टिव, पर्सनलाइज्ड, हमारे अपने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, बिकॉज हर एक की अपनी पर्सपेक्टिव होती है. अब कोई एक सेंटेंस एक सिचुएशन में होएगा, दे हैव टू फेस अ सर्टेन काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस, तो उनको बहुत ही परेशानी फील होगी, इट विल बी वेरी एगोनाइजिंग फॉर देम टू गो थ्रू दैट. और दूसरे को सेम सर्कमस्टेंस फेस करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, वो आराम से निकल जाएगा. Like there's a quote also, like two looked out of the window, one saw stars and the other saw mud. तो आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो वो टोटली सब्जेक्टिव है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, आप उस एंगल से हर चीज को देखते हो. बट एक्सपीरियंस जो है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट यूनिवर्सल. सो इट कैन वी कैन नॉट लाइक यूनिवर्सली कैटेगराइज कि अब ये स्वीट है या सार है, बिटर है, so everyone will get that same universal state. ये experience नहीं होता. The mind and the experiences जो है वो objective नहीं है, they are totally subjective. So each individual will feel an event in a different manner. अलग तरीके से हर चीज को जो है वो deal करेगा. And that is how we can understand that it's all a state of mind. Because only the mind can feel the different states. And every moment that we are living, जो भी हमारी existence है, it is being governed by our state of mind. It is being influenced by our past experiences. तो जहाँ जो भी हमने सब go through किया हुआ है, हर चीज जो है हमारे वजूद में जो है होती है, और उसी से हम आगे वाली चीजें भी उसी हिसाब से देखते हैं. But the best part is, all states of mind are temporary. इसलिए हमें उसको देख के घबराना नहीं चाहिए कि अरे इसी में ही फंसा हुआ हूं. ऑल द स्टेट्स ऑफ माइंड वो जो है चेंज होते रहते. सो व्हाई क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज क्रिएटिंग मिजरी फॉर यू? क्यों उसी में फंसे रहना चाहते हो? सो वी नीड टू क्वेश्चन आवर स्टेट ऑफ माइंड. क्यों हम इसमें इमर्स हो रखे हैं पूरी तरह से? व्हाई आर वी आर इन अ डिप्रेशन ऑफ आवर ओन क्रिएशन? अगर हमारा कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो हम उसमें क्यों फंसे पड़े हुए? एंड टू डू दिस, टू क्वेश्चन द माइंड, कैसे कर सकते हैं? वी नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम इट. जो भी माइंड में इमोशंस आ रही है, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर टू यूज. जो आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, वो फील कर रहा है ये इमोशन. जो आपका एक्चुअल वजूद है, जो आपका सोल लेवल है, इट कैन वॉच, ऑब्जर्व दिस माइंड thinking all these thoughts. So अब उस वाले को लेके आना है हमने अंदर, the second you, but we need to step back a little and see things from a distance with a detached look. What is this person getting involved in? Only then we can understand that it is a state of mind. जब हम step back करके अपने आप को देखते, सामने देखते. And this can happen when we bring in awareness, detachment, detach होके हम अपने बारे में aware हो जाए. So it allows us just to observe our mind without thinking, without judging. अगर हम detached way से अपने mind को देखेंगे, awareness लेके आएंगे कि mind में चल क्या रहा है, तो then there is a possibility of changing your state of mind. So when we bring in this awareness, जब हम देख रहे होते हैं अपने माइंड को, we can shift the state of mind. So this awareness, this allows consciousness, जो हमारी एक्चुअल वजूद है, उसको it allows it to detach itself from the physical identity and regain its former जो immortal self है, उसके साथ connection deeper हो जाता है. So if there is a lot of problems going on in my mind, so Meenu has to be here and I have to be here and observe this physical Meenu. So then that will bring a shift in my mind. Okay, why am I allowing these thoughts to bother me? I don't want these thoughts.
So choice आ जाती है मन में. So we have to become aware of this duality. That is what each person, each mind is it. And we have to realize that the conscious me and the physical me are two distinct things. So just making that distinction between conscious and physical mind, even for a few minutes, for a few seconds, it will sow the seeds of awareness. Just making a distinction. Okay, yes, here is Meenu and this conscious self is watching Meenu. Just for distinction आने से आपकी journey start हो गई awareness. So we have to consciously be with consciousness. ये जो aspect है ना कि you're watching your mind, this is called consciously being with consciousness. And जब वो state आ जाती है, then you're devoid of thought and you're just watching. वो 1-2-4 सेकंड भी अगर है बहुत, that is also enough. That is like it will start the journey, it will sow the seeds. So when you are just watching, आप देख रहे होते उस aspect को, you understand you are not the doer. There is some other power that is guiding your actions, and that higher power will not guide you along a wrong path. अब उसके हवाले आपने सरेंडर कर दिया, you realize that if you surrender to that higher part, आप किसी गलत रास्ते में नहीं जा सकते. तो फिर आपकी जो नॉलेज है राइट और रॉन्ग की, इट डज नॉट मैटर. आपकी क्या कॉन्सेप्ट्स है वो डज नॉट मैटर. And when you reach that place where you're making that distinction between conscious and the physical, everything becomes simple, because आपको तो अपना दिमाग चलाना ही नहीं ना, सोचना ही नहीं अरे मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या डिसीजन लेना क्या नहीं लेना, वो सब चीजें तो खत्म हो गई ना. You're just watching, you're not interpreting or coming to conclusions. कुछ भी नहीं अब रहता आपके साथ. You are then able to see the real state of mind, which is calmness, which is of being in the moment. You are in that state of thoughtlessness, complete, devoid of any form. कोई उसके साथ नाम नहीं attached, कुछ identity नहीं attached होती. And this is the real you, which can then give you that inner feeling of here I am. This is what I am. The one devoid of all thought, the consciousness. फिर जो I amness होती है ना, I amness, वो predominant हो जाती है. So the real self just watches, observes. वो I am वाली जो वो है feeling, जो real वाली है, it is observing the physical mind. So the person जो है, जो mind जो है, वो है, he gets embroiled in his thoughts, identifies with them, and his mind is full of past habits, memories, positive, negative qualities, सब mind में घुसा हुआ है. So everything, ये सारे thoughts जो है, they have the power to take him into controversies. But if he remains as an observer, nothing affects him. So फिर he says it's just a play of mind, कुछ है नहीं इसमें. The moment of no thought जो आता है, just that quiet observation, it makes you go quiet also. It takes you into silence. And we can, it is not कि हमें उसी में ही रहना है. We can continue to oscillate between the two, activity or silence. उसमें दोनों में हम इधर हो सकते हैं. And slowly the mind will get detached from the outside world and it will not have much effect. आप उस state of detachment में ही रहोगे. उससे क्या होता है? A door of possibilities opens. कि आप और क्या कर सकते हैं. And normally we are not aware that this door is available. कि हम just for those few seconds I can just stop and observe my mind. ये एक door है. We are not aware that it is available. But if he is made aware, if the person is made aware, then he will be able to follow the path. So इसमें करना क्या है? तो first of all we need to listen and understand. So listening and understanding is the first step. क्या आसपास what am I doing? What is the real me? इसको सिर्फ समझना है.
then being with it for a moment is in thoughts के साथ just observing them that this is a possibility, distinction है, ये सारे thoughts के साथ just be with them. Then you will begin to appreciate the freedom this is bringing into your mind. कि there is no pressure. कुछ हमने क्या करना है, क्या decision है, कुछ भी नहीं रह गया. I just have to observe my mind, I have to surrender. So you become free from being a slave to your mind. उसके ऊपर आप rise कर सकते हो. And when you give your attention to anything, it will grow. When you start giving attention to this thought, yes, there is a distinction between conscious and this physical mind, it will grow. And this awareness then carries you forward to the next part of your life, where we can, next part of the quote also, where we can enrich our life by enriching our experiences. Now, what are those experiences that enrich your soul? कौन से experiences है जिससे हमारा soul में growth होती है, उसकी enrichment आ जाती है? Simple है, fearlessness, wisdom, unconditional love, compassion, connectedness. All of these thoughts give us a blissful state. And when you're in that state, blissfulness, when you're in all these states, then you have the power, you have the acumen to choose only those states of mind that will give you an enriching experience. So you will become aloof with all the other kinds of states of mind, anger, jealousy, regret. उस सब से आप ऊपर उठ पाओगे. And you'll be more in these states of mind. And when you're able to create that distinction, you are in that state of enlightenment. So becoming aware that you have the power to make a distinction between the conscious and the physical mind, you are going into that state of enlightenment. And wahan jab aap pahunch jao, you have a liberated life. You're free from the dominance of the mind. You're no longer a slave of your mind. The mind doesn't have control over you anymore. So let's look at the quote once again. Everything is a state of mind. Understand this to enrich your life. So the more we become aware how these states of minds are poking us, provoking us, hindering us, the more we will be able to rise above them. So why would we choose something that is stopping us from moving forward? We have the power to choose positive aspects as well, the enriching ones. So I come to the end of my presentation. Stop share over here. I hope I have been able to give some insight about it all. Any questions or anything you would like to share? Good morning, madam. Good morning. Good morning. Why we have anxiety? Because we have fears. We have fears. Yeah, fears create anxiety. There are some, even if consciously I don't have any fears, I feel I'm very strong, but there are deep-rooted ones. And they are the ones which are bringing up that feeling of anxiety. और फिर लगता है कि अच्छा हम कुछ एंजाइटी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमें होना चाहिए थोड़ा सा हाइपर होना चाहिए. We remain in that state of mind because we sort of love it then. Thank you, Nupuji. Thank you. I think we also live in the future and we're always anxious what's going to happen, and Absolutely. we're oscillating, our mind is oscillating. If we just try and do meditation and be in the present moment, it'll be much better. Absolutely. Good morning, Meenuji. Good morning, Neelamji. Very nice. I just want to know the awareness and consciously. There is a difference. What is awareness? Consciously is the soul. Consciousness is the soul, and consciousness से ही awareness create होगी ना. When you become aware,
Yeah, what is becoming aware? The consciousness is becoming aware. Like I give the example in our life over here, we recall ourselves as a 2-year-old. उससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता. But हमें लगता है हमारी life. I remember an incident when I was 2-year-old. So my life has started from that moment. क्योंकि awareness is coming. उसके पहले as a baby we have no idea what where were we, how were we. तो हमारा जो consciousness है वो उस moment से start हो गया जब we became aware of ourselves in this life. So consciousness brings in that awareness. Consciousness is awareness. Mhm. So we consciously, as We I are said, we are conscious. consciously, We are conscious when we are aware. yes, we consciously bring in that, consciously we look at consciousness. तो वो awareness से देख रहे हैं ना. Mhm. No, awareness and consciousness, they are interchangeable. Not interchangeable. I wouldn't say that they're interchangeable. It is what it is. Consciousness is awareness. अब आपको कब आपका वजूद आपका कब से शुरू हुआ? So like if people have loss of memory, so they're 60 now, so they don't have consciousness of the rest of their life जो जा चुकी है. Awareness है ही नहीं. They become totally like in that space of unawareness. तो उनकी consciousness ही खत्म हो गई, है ही नहीं कुछ भी. So when consciousness की existence ही awareness से आती है. So we can use it as an interchangeable word in the sense that we mean they're synonyms. They're not something separate. अब कईयों को पास्ट याद रहता है, प्रेजेंट पता ही नहीं लगता. ये अल्जाइमर जो जी, है, जी. that is what happens. So these are all states of mind again because of influences on it, pressures on it. Mind का ये हाल हो गया. तो सब कुछ तो चल तो mind से ही रहा है ना. So when we become more aware कि okay, I can get into that state, तो पहले से ही awareness लानी पड़ेगी, and that will help us to avoid all these diseases also, all these issues, जो भी problems होती हैं. और forgetfulness, Again, a state of mind. Because you're too much involved in things, or you want to ignore things. You don't want to get into the moment, or you forget. Anything can be possible. Again, there's so many directions जहाँ से pressure आ सकता है. ओल्ड एज में फॉरगेटफुलनेस होनी शुरू हो जाती है, या उसको भी कॉन्शियसली आप अवॉइड कर सकते हो? That also we can avoid that. It's again a state of mind. एक वो बना हुआ है कि हाँ अब हम old हो गए हैं तो we are going to forget things. So we encourage that state of mind to happen. So if you keep your brain active, if you don't let all these thoughts, so you can avoid that state of forgetfulness also. So जितनी हम awareness, Empowerment of, sorry, हाँ जी, sorry. Empowerment is also the awareness. empowerment is something mind, different. Empowerment नहीं, would not of be mind. awareness. हाँ जी. Mind को empower करके उसको change कर सकते हैं. Mind तो है, उसको हम जैसे- empower हम इसलिए वो empower awareness लाके ही कर सकते हैं. Awareness. हाँ जी. Yes, what you're saying is correct. It empower awareness लाके ही हम mind को जो empower करते हैं. Thank you. जी. Meenu ji, हाँ जी Sanjay, good morning. good morning. How are you? I'm good, good. आप बताओ. हाँ, मैं ये सोच रहा था कि you know, like if we are in the state of thoughtlessness, that is, we are not actually using our physical brain, right? So even if we get affected by illnesses or like dementia or something, is it possible to remain out of that by being in that state of thoughtlessness, being yeah, so you're not actually affected by the illness so much? Yeah, absolutely. Because everything is a creation of the mind.
अब dementia भी है, over the years it has developed. It is not that suddenly one day you get up and you have dementia. So what is causing its development? If we are aware of it, then we can avoid its development also. With Again, the development of this consciousness, we'll be able to overcome these illnesses also. absolutely. When we are in the moment, that's what they all somatic healing, I think it is called. That when you're aware of yourself, your thoughts, you're able to avoid illnesses. But most of the Even things like that cancer, also, I think all these things. answer is, I feel it is totally due to your worrisome thoughts, your tensions, your stress. That is encouraging the cancer cells to develop in your body. They are already present. उनको खाद मिल जाती. Hmm. So again, Where your is- state of mind comes in. Huh? Your state of mind comes in. Yeah. But I don't know. But there are people who are in serious, it works for some people. Some people are positive minded, but still it doesn't help. So then there are like karmic patterns that you have to overcome. Hmm. So every lifetime is a step forward towards your development. तो आपने पीछे कुछ कर्म करें तो उसके भुगतान भी करना पड़ेगा. So maybe by having cancer, you're releasing those past karmas. So anything can be possible. अब पास So कर्मा it का तो is- प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आता नहीं. वो तो याद नहीं रहता पर उसका इफेक्ट तो रहता है ना. वो कॉन्शियसली होकर तो नहीं किया ना उस टाइम. हमने किसी को कुछ कह दिया इस लाइफ टाइम में, हमने कुछ गलत बात किसी को कह दी, हम भूल भाल गए, पर उसको याद है एंड ही हैज प्लान्ड कि वो रिवेंज तो लेके ही छोड़ेगा. अब मुझे तो याद ही नहीं वो कि वो रिवेंज लेना चाहता है, पर वो छोड़ेगा नहीं ना, तो कर्मा विल कैच अप विद मी. अभी कल मैं दृश्यम देख के आया 2 और उसमें यही Okay. चीज है. हाँ जी. उसने कॉन्शियसली होके इतना वो किया हाँ. एंड इट्स एवर सीइंग मूवी. Okay, great. So, Meenu ji, जी. like, is there a place in the brain where it is, where all this consciousness, this, the state of thoughtlessness comes from, which is activated? I'm not familiar with the biological aspect of it. But we are There told is that something yes, about you pineal can gland, achieve no? that state. Sorry? There's something about the pineal gland being for the third eye activation. हाँ, that is connected to it. Pineal gland को third eye से connect करते हैं, but मुझे इतनी details नहीं मालूम है उसके बारे में. अच्छा. कोई बात नहीं, next time. Absolutely. थैंक यू. Thank Thank you. you. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for joining in.